इस वीडियो में हम देखेंगे 16 मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर NISM Series VA Exam. I have tried to calculate all the problems in detail. ये समझाने के लिए कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स उतना हार्ड कुछ नहीं है, साथ साथ में कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कैलकुलेटर में भी कैलकुलेशन दिखाया है. इन एग्जाम कैंडिडेट्स विल हैव टू यूज द कैलकुलेटर. एग्जाम के टाइम कंप्यूटर स्क्रीन में जो कैलकुलेटर अपीयर होता है. एनी पेन, पेंसिल, पेपर और आउटसाइड कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन द टाइम ऑफ एग्जाम. वेलकम टू बैम्बाउस यात्रा. तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से. An investor bought 2000 units of a equity scheme when the NAV was rupees 110 per unit. After 8 months, the investor redeemed 1000 units at the NAV of rupees 140 with an exit float of 1%. How much amount the investor will receive after redemption? थाउजेंड यूनिट्स रिडीम करने पर इन्वेस्टर को कितनी अमाउंट मिलेगी? इसमें जिस पॉइंट्स को देखना जरूरी है. नंबर 1, रिडेम्पशन के लिए टोटल यूनिट्स 1000 नंबर्स. नंबर 2, रिडेम्पशन के टाइम नैव रुपीज 140. और नंबर 3, एप्लीकेबल एग्जिट लोड 1%. नाउ कैलकुलेशन. 1000 यूनिट्स के लिए रिडेम्पशन अमाउंट equals 1000 units into rupees 140 NAV equals rupees 1,40,000. एग्जिट लोड के लिए डिडक्शन 1% of 1,40,000 equals rupees 1,400. रिसीवेबल अमाउंट जो इन्वेस्टर को मिलेगा, वैल्यू ऑफ 1000 यूनिट्स माइनस एग्जिट लोड इक्वल्स rupees 1,38,600. रिडेम्पशन के लिए 1000 यूनिट्स इंटू 140 NAV इक्वल्स रुपीज 1,40,000 माइनस 1% एग्जिट लोड. सो नेट रिसीवेबल अमाउंट इज 1,38,600. नेक्स्ट प्रॉब्लम. The description of this problem is same as before, but the question is different. An investor bought 2000 units of a equity scheme when the NAV was rupees 110 per unit. After 8 months, the investor redeemed 1000 units at the NAV of rupees 140 with an exit load of 1%. What is the annualized return investor has received? यहाँ रिडेम्पशन के लिए टोटल यूनिट्स 1000 नंबर्स है. यूनिट्स खरीदते टाइम नैव 110 रुपीज थी. नैव जिस पर यूनिट्स को रिडीम किया जाता है वह 140 रुपीज है. इन्वेस्टमेंट की टाइम पीरियड 8 मंथ्स है. एग्जिट लोड है 1%. एनुअलाइज रिटर्न क्या होगा? नाउ कैलकुलेशन. रिटर्न की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें प्रॉफिट की अमाउंट जानना होगा. रिडेम्पशन के बाद नेट रिसीवेबल अमाउंट इक्वल्स ग्रॉस रिडेम्पशन अमाउंट माइनस एग्जिट लोड. 1000 यूनिट्स इंटू नैव 140 माइनस 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट इक्वल्स 1,38,600. 1000 यूनिट्स के लिए इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट equals 1000 units into 110. Investment के टाइम NAV equals 1,10,000. Now profit. Net receivable amount minus initial amount equals rupees 28,600. Now simple rate of return equals profit divided by initial investment into 100 equals 26%. And annualized return equals simple return divided by period in months into 12 equals 39%. 1000 units into 140 redemption का time NAV equals rupees 1,40,000 minus
1% exit load. So net receivable amount equal to 1,30,600 minus initial investment 1000 into 110. So this is the profit. So profit divided by initial amount into 100 simple rate of return divided by 8 period in month into 12. So 39% is the annualized return. Next problem. In a portfolio, value of stocks rupees 230 crore, value of money market instruments rupees 5 crore, dividend accrued but not received rupees 2.39 crore, amount payable on purchase of shares rupees 7.5 crore, amount receivable on sale of shares rupees 2.34 crore, fees payable rupees 0.41 crore, number of outstanding units 2.65 crore. Calculate the NAV. पोर्टफोलियो के एसेट में है स्टॉक इक्वल टू रुपीज 230 करोड़ और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रुपीज 5 करोड़. अर्निंग्स में है एक्रूड डिविडेंड रुपीज 2.39 करोड़ और शेयर्स की सेलिंग से रिसीवेबल अमाउंट रुपीज 2.34 करोड़. एक्सपेंस में है शेयर्स खरीदने के लिए पेएबल अमाउंट रुपीज 7.5 करोड़ और पेएबल फीस रुपीज 0.41 करोड़. आउटस्टैंडिंग यूनिट से 2.65 करोड़. NAV कैलकुलेट करना है. नाउ कैलकुलेशन. NAV इक्वल टू एसेट प्लस अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स. सो NAV होगा रुपीज 87.48. Here one thing needs to be noted. Dividend accrued but not received means ये डिविडेंड जरूर मिलेगा और इसे अर्निंग्स में कंसीडर किया जाता है. सिमिलरली कोई भी स्कीम एक्सपेंसेस accrued but not paid मतलब इट मस्ट बी पेड और वह लायबिलिटीज में आएगा. $230 plus 5 asset plus 2.39 plus 2.34 earnings minus 7.5 crore minus 0.41 equals 231.82 divided by outstanding units 2.65 equals 87.479 means 87.48. Next problem. Total asset under management AUM equals rupees 200 crore. Invested in securities rupees 140 crore. Investment in bank and debentures rupees 60 crore. Receivable interest accrued but not yet received rupees 8 crore. Expenses payable accrued but not yet paid rupees 4 crore. NAV rupees 10.20. Calculate the number of outstanding units. पोर्टफोलियो के एसेट में है सिक्योरिटीज रुपीज 140 करोड़, बैंक डिपॉजिट्स रुपीज 60 करोड़. अर्निंग्स में है एक्रूड इंटरेस्ट रुपीज 8 करोड़, एक्रूड एक्सपेंसेस रुपीज 4 करोड़. NAV इक्वल्स रुपीज 10.20. नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कैलकुलेट करना है. कैलकुलेशन. NAV equal to asset plus earnings minus expenses divided by outstanding units. So outstanding units equal to asset plus earnings minus expenses divided by NAV equals 20 crore. Next problem. If the average inflation rate is 4% per annum, how much amount of money is required to buy the same item after 4 years, which can be bought today at rupees 10,000?
आज की डेट में किसी प्रोडक्ट का परचेस प्राइस है ₹10,000। अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4% है तो 4 साल बाद उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कितनी अमाउंट की जरूरत होगी? कैलकुलेशन। इन्फ्लेशन की रेट को कंसीडर करते हुए रिक्वायर्ड फ्यूचर अमाउंट की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N, where A equal to future amount, P equal to present amount, R equal to rate of inflation और N equals time period। यहाँ A के वैल्यू कैलकुलेट करना है। P equals 10,000, R equals 4% और N equal to 4 years। So A equal to 10,000 into 1 plus 4% to the power 4 equals rupees 11,698.60। So 10,000 present amount into 1 plus 4% inflation rate to the power 4। किसी किसी कैलकुलेटर में x to the power y साइन नहीं रहता है, उधर ये to the power साइन यूज करना है। Next problem. An investor wants to redeem an amount of ₹45,000 from the portfolio. Present NAV of the particular scheme is ₹60. How many units shall be debited from the portfolio of the investor? रिडेम्पशन के लिए अमाउंट ₹45,000, प्रेजेंट NAV इक्वल्स ₹60। पोर्टफोलियो से कितनी यूनिट्स डेबिट की जाएगी? कैलकुलेशन। नंबर ऑफ डेबिटेड यूनिट्स फ्रॉम द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू रिडेम्पशन के लिए अमाउंट डिवाइडेड बाय करंट NAV इक्वल्स 750 नंबर्स। Next problem. An investor wants to receive an amount of ₹49,500 on redemption. Present NAV of the scheme is ₹125. An exit load of 1% shall be applicable on redemption. How many units shall be debited from the portfolio of the investor? रिडेम्पशन से रिसीवेबल अमाउंट ₹49,500 है, जो कि रिडेम्पशन रिक्वेस्ट का 99% है। करंट NAV इक्वल्स ₹125। एग्जिट लोड इज 1%। पोर्टफोलियो से कितनी यूनिट्स डेबिट की जाएगी? कैलकुलेशन। 1% एग्जिट लोड की डिडक्शन के बाद रिसीवेबल अमाउंट पर यूनिट इक्वल्स 99% ऑफ करंट NAV इक्वल्स ₹123.75। So number of debited units equals 49,500 यानी 99% of redemption request divided by 123.75 यानी 99% of NAV equals 400 numbers। 49,500 मतलब 99% of the redemption request divided by 99% of the existing NAV equals 400 और 125 existing NAV minus 1% exit load equals 400। हम दूसरा तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 49,500 वह अमाउंट है जो रिडेम्पशन रिक्वेस्ट का 99% है। जनरली किसी भी अमाउंट के 99% कैलकुलेट करने के लिए हम उस अमाउंट को 99% से मल्टीप्लाई करते हैं। Here 49,500 is 99% of requested redemption amount. So 100% वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम 49,500 को 99% से डिवाइड करेंगे। So 49,500 divided by 99% equals 50,000. The full amount, 100% amount divided by 125 full NAV equals 400 numbers।
Next problem. An amount of rupees 12,000 has grown to rupees 13,320 after 1 year of investment. The amount increases to rupees 14,520 after 2 years and rupees 15,800 after 3 years. Calculate the CAGR, compound annual growth rate. इनिशियल इन्वेस्टमेंट रुपीज 12,000 है, एक साल बाद ये बढ़कर रुपीज 13,320 हो जाता है, 2 साल बाद ये रुपीज 14,520 हो जाता है और 3 साल बाद इन्वेस्टर को रुपीज 15,800 मिलता है। इसमें CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन, कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसके वैल्यू में टाइम के साथ राइज और फॉल देखा जाता है, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न की कैलकुलेट करने के लिए CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन मेथड्स। CAGR कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू यानी FV डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू यानी IV टू द पावर 1 बाई N माइनस 1 इंटू 100, जहां N इक्वल्स पीरियड इन ईयर्स। इस कैलकुलेशन में FV इक्वल्स 15,800, IV इक्वल्स 12,000, N इक्वल्स 3, so the answer is 9.60%. डबल ब्रैकेट 15,800 यानी LV डिवाइडेड बाई 12,000 यानी IV, ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1 into 100 equals 9.60. Next problem. Value of stocks rupees 150 crore. Value of bonds rupees 67 crore. Value of money market instruments rupees 2.36 crore. Dividend accrued but not received rupees 1.09 crore. Interest accrued but not received rupees 2.68 crore. Scheme expenses accrued but not paid rupees 0.36 crore. Number of outstanding units 1.90 crore. Calculate the NAV. पोर्टफोलियो के एसेट में है स्टॉक रुपीज 150 करोड़, बॉन्ड्स रुपीज 67 करोड़, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रुपीज 2.36 करोड़। अर्निंग्स में है एक्रूड डिविडेंड रुपीज 1.09 करोड़, एक्रूड इंटरेस्ट रुपीज 2.68 करोड़ और एक्रूड एक्सपेंसेस इक्वल्स 0.36 करोड़। आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 1.90 करोड़ है। NAV कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन, NAV इक्वल्स एसेट प्लस अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग यूनिट्स इक्वल्स रुपीज 117.25। Next problem. An investor invested a sum of rupees 10,000 in a debt fund in the year 2018. The investor got an compounded interest return of 8% in the year 2021. If A is latter value LV, P is initial value IV, R is the rate of interest and N is the period in years, what will be the formula to calculate the LV, means latter value? इन्वेस्टेड अमाउंट यानी P रुपीज 10,000 है, कॉम्पाउंडेड रेट ऑफ रिटर्न 8% है, मतलब CAGR यानी R 8%, इन्वेस्टमेंट पीरियड यानी N 3 साल 2018 से 2021 तक। फाइनल वैल्यू यानी लेटर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला को आइडेंटिफाई करना है। लेटर वैल्यू यानी A के कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला है A इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N। तो चलिए एक बार A के वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेटर वैल्यू इक्वल्स 10,000 मतलब इनिशियल वैल्यू इंटू 1 प्लस
or rate of interest means 8% to the power 3 equal rupees 12,597.12. Next problem, if risk-free return is 6% and a scheme earned a return of 9%, the scheme's standard deviation is 0.50% and beta is 1.20. What will be the Sharpe ratio of the scheme? स्कीम के लिए रिस्क फ्री रिटर्न 6% है। स्कीम ने रिस्क लेते हुए 9% रिटर्न अर्न किया है। स्कीम का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.50% है। स्कीम का बीटा है 1.20। शार्प रेशियो कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन, शार्प रेशियो पोर्टफोलियो के टोटल रिस्क को कंसीडर करते हुए पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करता है। शार्प रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स 6। शार्प रेशियो जितना हाई होगा फंड उतना ही अच्छा होगा। नाइन माइनस 6 डिवाइडेड बाय 0.5 equals 6. Next problem. If risk-free return is 6% and a scheme earned a return of 9%, the scheme's standard deviation is 0.50% and beta is 1.20. What will be the trainer ratio of the scheme? Problem same as previous. Only here we need to calculate the trainer ratio. Calculation. ट्रेनर रेशियो एक फंड के सिस्टमेटिक रिस्क के आधार पर पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करता है। ट्रेनर रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय बीटा। सो हियर आंसर इज 2.5। एक बेहतर फंड का ट्रेनर रेशियो हाई होता है। शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो दोनों का यूज किया जाता है किसी इन्वेस्टमेंट के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को समझने के लिए। शार्प रेशियो कैलकुलेशन में एक्सेस रिटर्न यानी रिस्क प्रीमियम को डिवाइड किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन से और ट्रेनर रेशियो कैलकुलेशन में रिस्क प्रीमियम को डिवाइड किया जाता है बीटा से। रिस्क प्रीमियम मतलब रिटर्न अर्न टेकिंग ए रिस्क माइनस रिस्क फ्री रिटर्न। Next problem. An investor invests in 1000 units of a mutual fund scheme at a NAV of rupees 12 in the income distribution cum capital withdrawal reinvestment option. The NAV appreciates to rupees 15 and the mutual fund declares a dividend of 10% on initial investment. How many additional units shall be allotted to the investor? Investors are exempted from any tax liability. परचेस प्राइस यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर यूनिट ₹12 है। डिविडेंड पेमेंट के टाइम नैव यानी कम डिविडेंड नैव ₹15 है। इन्वेस्टर की टोटल यूनिट्स 1000 नंबर्स है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है यानी ₹12 पर 10% पर यूनिट। स्कीम है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉयल रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इन शॉर्ट डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में कितनी एडिशनल यूनिट्स ऐड की जाएगी? कैलकुलेशन, पर यूनिट डिविडेंड इक्वल्स 10% ऑफ ₹12 इक्वल्स ₹1.20। टोटल डिविडेंड अमाउंट इक्वल्स 1000 यूनिट्स इंटू 1.20 इक्वल्स ₹1200। नाउ एक्स डिविडेंड नैव इक्वल्स 15 यानी कम डिविडेंड नैव माइनस डिविडेंड पर यूनिट यानी ₹1.20 equals 13.80. So number of additional units equals dividend amount divided by X dividend NAV equals 86.956 नंबर। डिविडेंड पेमेंट के बाद
रिड्यूस्ड नैव को एक्स डिविडेंड नैव कहा जाता है, और जब तक डिविडेंड पे नहीं होता, मतलब नैव रिड्यूस नहीं होता है, उसे कम डिविडेंड नैव कहा जाता है। एडिशनल यूनिट इशू होता है एक्स डिविडेंड नैव पर। 12 into 10% dividend per unit into 1000 numbers equals 1200 total dividend divided by x dividend NAV, मतलब 15 कम dividend NAV minus dividend amount 12 into 10% equals 86.95. Next problem. Current NAV of a debt-oriented scheme is rupees 32. An investor redeemed 1200 units and received rupees 37,824. Calculate the applied exit load. स्कीम का करंट NAV 32 रुपीज है। इन्वेस्टर ने 1200 यूनिट्स रिडीम किया। रिडेम्पशन के बाद इन्वेस्टर को 37,824 रुपए मिले। रिडेम्पशन पर कितना एग्जिट लोड अप्लाई हुआ? कैलकुलेशन। पर यूनिट रिसीव्ड अमाउंट इक्वल टू टोटल रिसीव्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स रुपीज 31.52। हर यूनिट के लिए डिडक्शन करंट NAV माइनस रिसीव्ड अमाउंट पर यूनिट इक्वल्स रुपीज 0.48। सो अप्लाइड एक्सिट लोड इक्वल टू डिडक्शन पर यूनिट divided by current NAV into 100 equals 1.50%. First, deduction per unit. It is NAV minus received amount per unit. So, received amount equal to total received amount divided by number of units equals rupees 0.48. So, percentage deduction equals deduction per unit divided by NAV per unit into 100 equals 1.5%. You can calculate on total amount also. So, here total amount as per NAV equals 1200 units into 32 NAV minus received amount 37,824, so equals 576. It is the deduction, so it is the deduction on total amount. So percentage निकलने के लिए we have to divide the amount deducted by the total amount. So 576 divided by total amount 1200 into 32 into 100 means 1.5. This is the percentage deduction. Next problem. An investor redeemed 90% of the portfolio amount at a NAV of rupees 25. The portfolio value was rupees 75,000. During market correction, the investor again invested rupees 60,270 in the same portfolio with a NAV of rupees 20.50. Now, what will be the total number of units in the portfolio? रिडेम्पशन से पहले पोर्टफोलियो का वैल्यू था रुपीज 75,000। रिडेम्पशन के टाइम NAV थी रुपीज 25। इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो वैल्यू का 90% रिडीम किया। मार्केट करेक्शन के टाइम इन्वेस्टर फिर से वही पोर्टफोलियो में रुपीज 60,720 इन्वेस्ट करता है। मार्केट करेक्शन के टाइम NAV रुपीज 20.50 है। न्यू परचेस के बाद टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन। रिडेम्पशन से पहले टोटल यूनिट्स इक्वल्स पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइडेड बाय रिडेम्पशन के टाइम NAV इक्वल्स 3000 नंबर। टोटल यूनिट्स रिडीम्ड इक्वल्स 90% ऑफ द टोटल यूनिट्स, मतलब 90% ऑफ 3000 equals 2700 number.
So balance units equals total units 3000 minus redeemed units 2700 equals 300 numbers. मार्केट करेक्शन के दौरान खरीदी गई टोटल यूनिट्स इक्वल्स इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन डिवाइडेड बाय नैव ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन इक्वल्स 2940 यूनिट्स. सो न्यू इन्वेस्टमेंट के बाद टोटल यूनिट्स इक्वल्स प्रीवियस बैलेंस यूनिट्स प्लस नई खरीदी गई यूनिट्स इक्वल्स 3240 नंबर. पोर्टफोलियो वैल्यू हुआ 75,000, इसमें रिडीम किया गया 90%, सो बैलेंस अमाउंट 7,500. सो 7,500 डिवाइडेड बाय 25 रिडेम्पशन का टाइम नैव, सो बैलेंस यूनिट इक्वल 300 नंबर प्लस न्यू यूनिट्स मतलब मार्केट करेक्शन के टाइम इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट करेक्शन के टाइम नैव इक्वल्स 3240 number. Next problem. An investor placed a switch request for 2000 units from an equity scheme to another ELSS fund. The switch request is placed after 13 months of purchase. Current NAV of the equity scheme is rupees 135. Investor purchased at rupees 65 per unit. Current NAV of the ELSS fund is rupees 85. How many units of ELSS fund shall be allotted to the investor? Tax applicable as per Income Tax Act. इक्विटी स्कीम जिसे स्विच किया जाएगा उसकी करंट नैव रुपीज 135 है. इक्विटी स्कीम का परचेस प्राइस रुपीज 65 था. स्विच की जाने वाली यूनिट 2000 नंबर्स है. इन्वेस्टमेंट पीरियड 13 महीने है, इसलिए इन्वेस्टमेंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा. फर्स्ट रुपीज 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्टेड है फॉर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम. बैलेंस अमाउंट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% एप्लीकेबल होगा. ELSS फंड का नैव रुपीज 85 है. स्विच करने से इन्वेस्टर को ELSS फंड की कितनी यूनिट्स अलॉट की जाएगी? कैलकुलेशन. टैक्स डिडक्शन से पहले इक्विटी स्कीम की स्विचेबल अमाउंट इक्वल टू 2000 यूनिट्स इनटू करंट नैव रुपीज 135 इक्वल्स रुपीज 2,70,000. 2000 यूनिट्स के लिए परचेज अमाउंट इक्वल्स 2000 इंटू 65 परचेज के टाइम नैव इक्वल्स रुपीज 1,30,000. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्वल्स 2,70,000 minus 1,30,000 equals 1,40,000. Taxable capital gain equals rupees 40,000 क्योंकि फर्स्ट 1 लाख कैपिटल गेन इज टैक्स एग्जम्प्टेड. नाउ कैपिटल गेन पर टैक्स इक्वल्स 10% ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन मतलब 10% ऑफ 40,000 इक्वल रुपीज 4,000. सो नेट स्विचेबल अमाउंट equals total amount before tax deduction means 2,70,000 minus 4,000 applicable tax equals 2,66,000. So allotted units of ELSS fund shall be net switchable amount divided by NAV of ELSS fund equals 3129.411 number. Total amount for switch 2000 into current NAV 135 equals 2,70,000. Minus purchase price 2000 units into 65 NAV equals 1,40,000 is the capital gain. Minus 1 lakh तो taxable capital gain 40,000 क्योंकि फर्स्ट 1 लाख टैक्स एग्जम्प्टेड है. 40,000 का 10% मतलब 4,000 टैक्स पे करना पड़ेगा. अभी इसको माइनस करना है तो इसको हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -4,000. इसे किससे माइनस करना है? जो अमाउंट स्विच के लिए रखा गया है मतलब 2000 यूनिट्स इंटू 135 करंट नैव. सो टोटल स्विचेबल अमाउंट 2,66,000 मतलब नेट स्विचेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय नैव ऑफ ELSS फंड 85 so 3129.411.
ये यूनिट्स मिलेगी ELSS फंड की। Here we have solved 16 problems. The more you practice, the faster you can do calculation. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इतने हार्ड नहीं है। आप एक ही प्रॉब्लम में डेटा यानी नंबर चेंज करके उसको कई में बदल सकते हैं। बस और प्रैक्टिस करते रहिए। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।